Welcome, dear students. We shall study coupled oscillations in today's lecture. तो इसमें हम देखेंगे कि what is the classification of coupling, various types. फिर we shall consider special type of coupled oscillations, जिसमें दो oscillators को हम एक spring के साथ couple करेंगे. So that will be called stiffness coupled oscillator. We shall derive expression for its frequency and time period, and finally we shall do a problem on the stiffness coupled oscillator. We shall take the example of hydrogen molecule. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है that can be treated as a spring, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं they are the two masses. So what are coupled oscillations? जब हम दो ऑसिलेटिंग सिस्टम्स को या दो से ज्यादा ऑसिलेटिंग सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे इन सच अ मैनर कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑसिलेटिंग सिस्टम तक एनर्जी ट्रांसफर हो सके, तब ये जो कलेक्टिव ऑसिलेशन है it is called coupled oscillations. So coupled oscillations occur when two or more oscillating systems are connected in such a manner as to allow motion energy to be exchanged between them. तो ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती है? बिकॉज ऑसिलेटर्स में एक कंपोनेंट कॉमन होता है that acts as the coupling component. तो वो कॉमन कंपोनेंट कैपेसिटेंस हो सकती है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और मैकेनिकल डिवाइसेस में इसी का एनालॉग है स्टिफनेस और स्प्रिंग, या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इंडक्टेंस हो सकती है. तो मैकेनिकल डिवाइसेस में इसी का एनालॉग मास हो सकता है यानी इनर्शिया, और जो तीसरा तरीका है कपलिंग करने का दैट इज रेजिस्टेंस. लेकिन रेजिस्टेंस कपलिंग का नुकसान ये है कि इससे एनर्जी लॉस होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली जो वाइब्रेशंस हैं दे डिके एक्सपोनेंशियली. अलबत्ता अगर हम कपलिंग करें बाय कैपेसिटेंस और स्टिफनेस या इंडक्टेंस और मास, तो इसमें कोई एनर्जी या पावर लॉस नहीं होता है. तो कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड दिस इज द बेसिस ऑफ वेव मोशन. तो वेव मोशन इज बेसिकली कपल्ड ऑसिलेशंस. तो एक एग्जांपल हम लेंगे कि जिसमें दो ऑसिलेटर्स के दरमियान हमने कपलिंग की है यूजिंग स्टिफनेस. तो यहां पे एक ऑसिलेटर है सिंपल पेंडुलम, और दूसरा ऑसिलेटर भी है सिंपल पेंडुलम. और इन दोनों ऑसिलेटर्स को हमने कनेक्ट किया है विद अ स्प्रिंग. सो दिस इज द कपलिंग कंपोनेंट. तो इसको हम कहेंगे स्टिफनेस कपल्ड ऑसिलेटर्स. तो मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में हम दो ऑसिलेटर्स को कपल कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग. लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स हुए, लाइक वी हैव एन ऑसिलेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज LC oscillator. This is LC oscillator on left hand side. इसी तरह right hand side पे we have got another LC oscillator. और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है using this component which is a capacitor.
and this capacitor acts as the coupling component. तो इसको हम कहेंगे capacitance coupled oscillators. Next, we shall see mass coupled oscillators. So we have got two oscillators in the form of two springs. So this is the first oscillator. It is a spring, and this is second oscillator, again spring. तो इन दोनों के दरमियान हमने कनेक्ट किया है मास. So this mass acts as the coupling component. तो इसको हम कहेंगे mass coupled oscillators. तो मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में जो रोल मास प्ले करता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, वही रोल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में इंडक्टेंस करती है. तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में there is one oscillator which is LC on left hand side. इसी तरह right hand side पे there is another oscillator. So both are LC oscillators. So one oscillator is LC oscillator. Another oscillator is also LC oscillator. तो जो लेफ्ट हैंड सर्किट है उसको हम कहेंगे प्राइमरी, जो कि होता है इन मेनी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जो राइट हैंड साइड पे सर्किट है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी. तो जो प्राइमरी में इंडक्टर है इसके ऊपर सेकेंडरी का इंडक्टर वाउंड किया जाता है. तो इन दोनों के दरमियान जो इंडक्टेंस होती है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो जाता है, एंड वी कॉल दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्ट्स हियर एज द कपलिंग कंपोनेंट. तो इस सर्किट को हम कहेंगे इंडक्टेंस कपल्ड ऑसिलेटर्स. सो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम जिसमें हमने दो ब्लॉक्स लिए हैं विद मास m1 एंड m2, और इन दोनों के दरमियान हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है, एंड दैट स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट K, and the whole system lies on a smooth horizontal surface, means friction is negligible. So the two masses are free to oscillate along length of the spring, that is along the horizontal direction. So the system is now a coupled oscillator. इसमें spring acts as the coupling component. Let us take point O as origin. तो इनिशियली जब ये सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे जो इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है विदाउट एनी कंप्रेशन और elongation, that is L0. So L0 is the normal length of the spring. लेकिन जब ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग कंप्रेस भी होगा, एलोंगेट भी होगा, तो कॉन्सिक्वेंटली ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी. सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट एंड ऑफ स्प्रिंग? Let us denote that with x1. So x1 is the instantaneous position of left end of the spring. और इसी तरह हम देखेंगे कि what is the instantaneous position of the right end of spring. This is the right end of spring. तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगी दैट उसको हम डिनोट करेंगे विद x2. सो रिमेंबर x1 इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. सिमिलरली x2 इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
it depends on time. But this L naught, which is the normal length of the spring without any elongation, without any compression, this is constant. Then the length of the spring at any instant of time, that will be x2 minus x1. And this length, this will be a function of time. It will be dependent on time. तो अगर हम extension of spring देखना चाहें, L naught is its original length and L is length at some instant of time. तो L minus L naught will give us extension. तो उस extension को हम X से denote करेंगे. तो अगर हम अब ये देखना चाहें कि what are the two forces acting on the two blocks, तो spring में एक force पैदा होता है and that is called elastic force, and that always acts towards mean position. So that means जो M1 है इस पे force होगा to the right, so F1 will be to the right, और जो M2 body है इस पे force होगा towards spring यानी towards left. So these will be the directions of forces on the two bodies. So we can write that F1 will be equal to K times X, और जो F2 है that will be again K times X but with a minus sign. A positive value of force means it is acting along positive x-axis, और जो negative value है it means it is acting along the opposite direction. Now F1 equals Kx and F2 equals minus Kx. So accelerations, they are the second differential coefficients of displacement with respect to time. So x1, it is a displacement of the first object. इसको हम दो बार differentiate करेंगे with respect to time, so that becomes x1 double dot. This is the Newtonian notation. X1 double dot. This is second differential coefficient of x1 with respect to time. And similarly, x2 double dot, this is second differential coefficient of x2 with respect to time. So x1 double dot gives acceleration of first body of mass m1, and x2 double dot, it gives acceleration of the second body, which has got mass m2. So using Newton's second law, we can write mass into acceleration for first body equals force, that is kx. Let us call this equation number 1. इसी तरह हम second body के लिए लिखेंगे mass into acceleration equals force, and that force equals minus kx. So this is equation number 2. Let us multiply equation number 1 by m2. So we will get m1 m2 x1 double dot is equal to, तो right hand side पे भी m2 से multiply करना पड़ेगा. So m2 times kx. We will call this equation number 3. Let us multiply equation number 2 with m1. So we will get m1 m2 और उसके बाद है x2 double dot, and this will be equal to minus m1 k times x, and let us call this as equation number 4.
Subtracting third from 4, तो इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर थर्ड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज m1 m2 x2 डबल डॉट देन माइनस, अब हम इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे m1 m2 इंटू x1 डबल डॉट इज इक्वल टू, अब हम इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड लिखेंगे विच इज माइनस m1 kx देन माइनस बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन इक्वेशन थर्ड का राइट हैंड साइड दैट इज m2 kx। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम m1 m2 कॉमन आउट कर सकते हैं। सो m1 m2 देन ब्रैकेट, पहली टर्म में बचेगा x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे एक तो माइनस कॉमन आउट आएगा और kx, तो पहली टर्म में बचेगा m1 प्लस दूसरी टर्म में बचेगा m2 और हम kx भी कॉमन आउट कर रहे हैं। तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट एंड वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। बट जो एक्सटेंशन है x that is instantaneous length minus the original length and L equals x2 minus x1 and then there is minus L naught. Let us differentiate it twice. तो एक बार differentiate करेंगे तो we will get x dot, that is differentiation of x with respect to time, is equal to x2, तो उसको भी differentiate करेंगे dot then minus x1, उसकी भी differentiation आएगी dot minus L naught is a constant, तो इसकी differentiation आएगी 0। एक और बार differentiate करेंगे we will get x double dot equals x2 double dot minus x1 double dot. Let us call this equation number 6. Let us use equation number 6 in 5, यानी equation number 5 में left hand side पे ये जो x2 double dot minus x1 double dot है उसकी जगह हम x double dot use करेंगे। तो we will get m1 m2 into x double dot is equal to minus times m1 plus m2 times kx. In the next setup ये जो m1 plus m2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो we will get m1 m2 whole divided by m1 plus m2 into x double dot is equal to, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचता है minus kx, which implies ये जो लेफ्ट हैंड साइड में x डबल डॉट का कोएफिशिएंट है m1 m2 by m1 plus m2, let us put that equal to mu. So we will get mu times x double dot is equal to minus kx. Let us call this equation number 7. अच्छा, यहाँ पे जो हमने m1 m2 divided by m1 plus m2 की जगह mu substitute किया है, it is called reduced mass of the two bodies. Mu, it is given by m1 into m2 divided by
m1 plus m2. It is called reduced mass of the two bodies. You can treat equation 7 as the equation of a motion of a body जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है -kx, that is the spring force. So as if ये spring force एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रहा है जिसका मास है म्यू. फर्क ये है कि here mu represents reduced mass of the spring instead of mass m of a single body, and here x, it represents the relative displacement in place of displacement of the single mass from its equilibrium position. तो इक्वेशन 7 को अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो we can show that there is a single body of mass mu attached to a spring k, and it has an instantaneous displacement x. So we can say that we have reduced two body problem to a single body problem. So we can write equation 7 as mu x double dot is equal to minus k times x. Let us divide by mu on both sides. तो यहाँ पर भी mu से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी mu से डिवाइड करेंगे. We will get x double dot is equal to minus k by mu x. राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम प्लस. सो वी विल गेट x डबल डॉट प्लस k बाई म्यू टाइम्स x, और राइट हैंड साइड पे 0 बचता है. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 8. अगर हम इक्वेशन 8 को कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच इज x double dot plus omega square x is equal to 0. तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट है k बाई म्यू, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर. तो वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई म्यू. Let us take square root on both sides. So left hand side पे square and root will go. So we get omega is equal to under root k by mu. अच्छा, चूंकि reduced mass जो है it is less than lesser of the two individual masses, यानी कि if m1 is less than m2, then mu will be less than m1, and if m2 is less than m1, so m2 is the lesser, then mu will be less than m2. So the reduced mass is less than lesser of the two individual masses, चाहे m1 चाहे m2, mu का वैल्यू उन दोनों से कम होता है. तो consequently mu is in denominator, omega का वैल्यू ज्यादा होगा. तो it means the frequency of coupled oscillation will be greater than the frequency of the two individual oscillators. Now under root k by mu equals omega, and omega equals 2 pi by t. तो यहाँ से हमें पीरियड के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. t को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 2 pi will remain at there in the right hand side. तो k by mu it will go to right hand side. तो right hand side पे हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, mu by k. Let us call this equation number 9,
and equation 9 gives the time period of simple harmonic motion of the reducer. So what is the conclusion? The conclusion is that the two bodies connected by a spring, they act and oscillate like a single body of mass equal to reduced mass of the two bodies and attached to one end of that spring. तो इस पर हम एक प्रॉब्लम करेंगे. Determine frequency of oscillation of a hydrogen molecule if its force constant is 4.8 into 10 raised to power 2 Newton per meter and mass of each hydrogen atom is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. So we can treat hydrogen molecule as two masses M1, M2 attached by a spring with a spring constant K. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो ये बॉन्ड है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्प्रिंग. अच्छा, हियर द टू मासेस आर इक्वल, सो लेट M1 इज इक्वल टू M and M2 also equal to M. So what is given? The force constant is given, that is 4.8 into 10 raised to power 2 Newton per meter. The two masses M1 is equal to M2 is equal to some M, say, and that equals 1.67 into 10 raised to power minus 27. So first of all, we have to calculate the reducer mass. The reducer mass is M1 into M2 by M1 plus M2. Since the masses are equal, we will write M into M divided by M plus M. तो न्यूमरेटर में हमें M स्क्वायर मिलेगा, डिनोमिनेटर में ट्वाइस M मिलेगा. तो डिनोमिनेटर में M का एक पावर न्यूमरेटर के एक पावर को कैंसिल करेगा. तो we get reducer mass is equal to M by 2, half of the mass of each hydrogen atom. So this will be equal to 1.67 by 2 into 10 raised to power minus 27 kilogram. Next, you can calculate the frequency. Frequency is given by under root of K by mu. So you can substitute the value of K, you can substitute value of mu, so you will get some value. और उसके बाद this is angular frequency. अगर आप linear frequency भी निकालना चाहें तो that will be equal to angular frequency by 2 pi. So you can calculate that value also. So I leave this problem to you.